if he is not 16 years of age and he is 14 years of age. अब बात नहीं समझ रहे हैं ना, 25 साल का सिर्फ लड़ सकता है ना इलेक्शन। वो सचमुच कहता है मैं 16 साल का हूँ, वो सचमुच कहता है मैं ग्रेजुएट ना हूँ, नेचुरली कांट कंटेस्ट इलेक्शन। सो ये जो ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी वाली बात तो बिकम्स इररेलेवेंट। यू से कि आपका फॉर्म गलत था, आपका ये गलत था, इससे हम कंस्ट्रक्ट ये करते हैं कि आप अमीन नहीं हैं। Court has to determine whether he was qualified on the day of nomination under 62, 63. वो रिजेक्ट कर देना उसे, और अगर उसने गलत बयानी से किया उसको रिजेक्ट कर दे। पर नेक्स्ट इलेक्शन जब आ रहा है तो हाउ इज ही स्टिल डिस्क्वालिफाइड, ये बताए ना सिर्फ पॉइंट। Now I will come to answer this question. I will come to my second. देखिए एक आदमी ने एक रोपा में चेंज हुआ कि जी ग्रेजुएट होना चाहिए, एक ग्रेजुएट नहीं, उसने दरखास्त फाइल कर दी, वो मेट्रिकुलेट है, नेचुरली ही विल बी डिस्क्वालिफाइड। अगले इलेक्शन में ये कंडीशन है ही नहीं, तो ही कांट बी अ लाइफ टाइम बार, इट्स इलॉजिकल। That's what I'm saying. Article 62 may, if there is a declaration that person is not honest. Why he was not honest? Because in my case, now you've taken a leap of faith. No, my lord. No. Again, अब आ जाती बात ये leap of faith वाली. So you are saying honest. Now honest. Suppose okay, let's take another case. Make it simple. He honestly declares in his nomination papers that he's a matriculate. He honestly declares in his paper that he's 16 years of age. Honestly, उसने लिखा 16 साल का हूँ. Consequence तो वही होगा ना. If he is not 16 years of age, भाई वो कह रहा है मैं हूँ 16 साल का। If he is not 16 years of age and he is 14 years of age, अब बात नहीं समझ रहे हैं ना, 25 साल का सिर्फ लड़ सकता है ना इलेक्शन। वो सचमुच कहता है मैं 16 साल का हूँ, वो सचमुच कहता है मैं ग्रेजुएट ना हूँ। आप इसको नेचुरली कांट कंटेस्ट इलेक्शन। सो ये जो ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी वाली बात तो बिकम्स इररेलेवेंट। It's a factual determination. That's what I'm saying. Fact. Who has to do the factual determination? चलिए ओके आगे बढ़े। मैं Only election tribunal through recording of evidence. We've understood the first point, please. Now my move on to the next point, please. The duration part. इसी पे देखें ना, जो फर्स्ट आपने कहा कि प्री इलेक्शन जो उसकी नॉमिनेशन पेपर की रिजेक्शन है, that does not cover the grounds mentioned in 68. वो तो होने ही आफ्टर द इलेक्शन है, आफ्टर द इलेक्शन है, तो इसलिए वो तो जस्ट रिजेक्शन ऑफ द पेपर्स एज पर योर आर्गुमेंट्स। दैट इज माय कोई डिक्लेरेशन कोई फर्दर नहीं होती। वो क्वालिफाइड था या नहीं था पहली डेट के ऊपर, वो तो रिटर्निंग ऑफिसर ने चेक करना है ना। अगर रिजेक्ट होगा तो अपील हो जाएगी, अगर कोई अपोज करेगा तो भी अपील हो जाएगी, ठीक है ना। मगर बात क्वेश्चन इज दिस कि आफ्टर सेवरल इयर्स वो कहेंगे इवन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर नॉमिनेशन पेपर यू वर डिस्क्वालिफाइड, दैट डिक्लेरेशन इज टू बी गिवन बाय विच कोर्ट? Election tribunal. Election tribunal. You've understood that, Mr. Khurram. चलो Khurram, let's proceed further. एक बात इसमें और बता दें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल क्या डिस्क्वालिफिकेशन 60 आर्टिकल 63 से हट कर दे सकती है? और अगर कोई डिक्लेरेशन वो कर दे कि इज डिस्क्वालिफाइड और वो डिस्क्वालिफिकेशन 63 में नहीं आता, नहीं क्या उसकी बुनियाद पर नहीं फॉर इवन फॉर सिंगल डे ही कैन बी बार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग? Election tribunal has to decide on the basis of 62 for qualification. No, and disqualification is 63. This is clear. If any declaration is made by the tribunal which is not in accordance with Article 63, whether on that basis, even on the declaration of tribunal, somebody can be debarred from life or even for a day. No, my lord. Without trial cannot. Even trial is conducted, the tribunal come to even after trial it cannot. वो कह देता है कि disqualified. Without the ground given in 63 he cannot. Mr. Khurram, could we just summarize what's happened? Your submission is that first of all disqualification can only come through a plenary court of plenary jurisdiction plus the election tribunal and the appellate forum hearing that election tribunal's appeal. That's one, and declaration cannot come from any other source. Change here. मैं कुछ और कहना चाहता हूँ. My lord. So this we've understood. I'm just saying that the premises on which Samuel Baloch proceeds is that once that declaration is in the field, that you're disqualified. My lord. Unless that declaration is set aside, you remain disqualified. My That's lord. the premise of Samuel Baloch, My number lord. one. Number two, Samuel Baloch also says that declaration is not right in your face, saying that you infer from the circumstances of the case. For example,
एग्जांपल वो कहेंगे कि आपने मिस डिक्लेरेशन की है, इससे इन्फर कर रहे हैं आप ऑनेस्ट नहीं है, बिकॉज नोबडी इज डायरेक्टली इस पे तो एविडेंस नहीं ना आप ऑनेस्ट है, आई मीन आप इन्फर कर रहे हैं, दैट्स व्हाट समीउल्लाह बलोच आल्सो सेज, सो यू कंस्ट्रक्ट इट, यू से कि आपका फॉर्म गलत था, आपका ये गलत था, इससे हम कंस्ट्रक्ट ये करते हैं कि आप अमीन नहीं हैं. These are the two premises on which Samiullah Baloch proceeds. Now we just need to understand whether at all the fact that the disqualification stands can continue forever, and if that disqualification was taken into a criminal proceedings and he went through age 63 age and went through a actual conviction, he comes back, and there are a number of other offences where he commits even a heinous crime, he comes back. तो बस इसका हमें आप बताइए कि the fact that Samiullah Baloch goes on the premise that declaration on the civil side done will continue as long as that declaration is set aside. My lord has properly rephrased Samiullah Baloch, but my argument is a bit different from that. Right. My argument is any declaration coming from a high court in a constitutional jurisdiction. We understood that's not a declaration, so that's all not a those declarations So are the out. only court of plenary jurisdiction is elected. Understood. आगे चले.